who can look extremely beautiful even when she is extremely angry is Shabana Azmi. At that moment, I felt maybe what he meant was if there's one person who can look beautiful while she convinces us that she is going through an emotion that's considered entirely opposite of beautiful is her. Maybe that's why, because of this exact conviction on her craft, respected poet Kaifi Azmi Sahab, who is also her father, wrote these lines exactly for her. आँखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रही हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. मैम, आप आई यहाँ हमारे साथ है. आई कांट बिलीव हमारे सामने है. इतना तो मैं यहाँ मौजूद हर एक के तरफ से यकीन के साथ कह सकती हूँ. हम सब दुआ करते हैं अब आप जब भी मुस्कुराओ, जितना भी मुस्कुराओ, आपको उसके पीछे कोई गम छुपाना ना पड़े. Today, each one of us who we are here, we've been bestowed with a great blessing. Thousands of people just whisper to see her talk, to see her teach, and to help us catch all from this blessing. We have none other than our very own poet, whose poetry are considered, I believe, whose poetry are synonym of love and innocence. He is none other than our very own poet, Viplob Pratik, sir. He is also known as someone you can go to if you want to know about words, styles, artists, and their stories. So I'd like to invite him to share his stories that he knows about Shabana ma'am and to have a soulful conversation. एकैछिन हाम्रो एउटा छोटो भिडियो छ, इन्ट्रोडक्सन भिडियो. त्यो भिडियो भइसकेपछि कन्भर्सेसन सुरु हुनेछ. Amusing. Yes, there were times. To think I did all
to talk to the poet, the poetry herself, Shabana Azmi ma'am. नमस्कार, थैंक यू। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है लगता है कि मैं ख्वाब में हूँ। मैं छू के दिखा देती हूँ। आई एम रियल। वेलकम यू ऑल। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। Thank you so much, the Mandala team, for providing me this memorable moment. I don't want to say that it's one of the memorable moment. It's a memorable moment for me, and it always will be. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ, कुछ मेरी क्यूरियोसिटी है और उसके बाद में क्यूरियोसिटी तो मेरी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन अपने दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, नेपाल के सबसे क्रीम आर्टिस्ट, क्रीम पीपल, इनको क्या बोलें, कोई किसी से कम नहीं। तो इन लोगों की भी कोई क्यूरियोसिटी होंगी तो वो भी आपसे बात करेंगे। आपकी इजाज़त है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो मैं आगाज़ आपके नाम के मतलब से करते हैं। इसका एक अर्थ तो बिलोंगिंग विथ नाइट भी है, मगर आप तो उजाले की सिनोनिम है। बेहतरीन अदाकार, थॉटफुल एक्टिविस्ट एंड अ ब्लेस्ड एंड काइंड सोल यू आर। कुछ कहेंगी अपने बारे में, आपके नाम के बारे में? दरअसल मेरा नाम जो है, एक तो मैं पहले, वुड यू लाइक मी टू स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी? हाउ मेनी पीपल वांट मी टू स्पीक इन हिंदी? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी पीपल वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? रेज योर हैंड्स। अच्छा, तो फिर दोनों करेंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज, वील डू बोथ। So the fact is that my name was given by the very eminent poet Ali Sardar Jafri, और उन्होंने ये नाम रखा था। In fact मेरी जो दादी थी वो तो चाहती थी कि मेरा नाम कनीज़ फातिमा हो। अब आप सोचते हैं कि अगर मेरा नाम कनीज़ फातिमा होता तो क्या मैं फिल्मों में काम कर सकती थी? नहीं मुमकिन है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि सरदार जाफरी ने ये नाम रखा है। मैं शबाना मीन्स रात की शराब, intoxication. Wow. So that was, whether I managed to intoxicate anybody, I don't know, but that was the intention with which my name was given. अभी लास्ट पे कुछ बात करेंगे, उसमें खुल जाएगा इसके बारे में। अच्छा, ओके। क्या हुआ है बोल के। तो आपकी वालिद साहब एक बेहतरीन शायरों में से एक है, मेरे बहुत मन पसंद है वो, कैफी साहब। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट थे, उसकी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी जो राइटिंग है, मैं आज जो भी कुछ लिखता हूँ इन सब शायरों को पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहाँ तक पहुँचा हूँ मालूम नहीं है। तो उनकी शायरी से आपकी अदाकारी में कुछ असर हुआ? देखिए, मेरी पैदाइश एक ऐसे माहौल में हुई। I was raised in a family where it was believed that art should be used as an instrument for social change, कि कला को एक सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। So my father with his work as a poet and my mother as an actor with the work that she was doing in theatre, that's what I grew up believing. Let me tell you a little bit about myself. 9 साल की उम्र तक हम लोग एक कम्यून में रहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून, which basically meant कि 8 कमरे थे in which there were 8 families who were living and the room was only 225 square feet. So it was a really small room. There was one common bathroom and one common toilet for 8 families. 8 families जो हैं एक बाथरूम और एक टॉयलेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी गरीब होने का एहसास नहीं हुआ। क्या बात है? क्योंकि जो हमको वहाँ से मिला, जिस तरह की
सोच, जिस तरह की विचारधारा, the fact that you have to concern yourself with the fate of the less fortunate than you. So, women's emancipation, speaking for the downtrodden, giving respect to the person who's working, India's celebration of her composite culture, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, that was a given. That was what we grew up with. But I didn't understand what a poet meant. मुझे ऐसा लगता था कि शायर का क्या मतलब है, कवि का क्या मतलब है, ये तो दिन रात बैठ के कुछ लिखते रहते हैं. He doesn't go to office. वो जो है, he doesn't do anything that other fathers do. तो मुझे ऐसा लगता था कि I'm sorry to interrupt you. Yeah. आपने कहीं कहा था कि मतलब पोइट्री लिखना, जो शायरी करना है, वो फुल टाइम जॉब नहीं है. फुल टाइम जॉब नहीं है, मुझे ऐसा लगता था. तो मुझे लगता था कि वो तो फिर एक तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर जो है वो आई नेवर यूज्ड टू कॉल हिम डैडी, आई यूज्ड टू कॉल हिम अब्बा. देन ही डिडंट वेयर ट्राउजर्स एंड अ शर्ट एंड ही डिडंट गो टू ऑफिस. सो अ पोएट वाज अ यूफेमिज्म फॉर समबडी हु डिड नो वर्क. दैट्स व्हाट आई थॉट. फिर जब मैं स्कूल गई और वर्ड्सवर्थ और कीट्स और टेनिसन, इन सब लोगों को मैंने जाना, तब मुझे what it meant to be a poet, what it meant to be a poet, I started respecting that. Also, my father, I used to think, was very strange because I was 7 years old and I was sent to a convent school. तो बाकी सब लोगों की तरह, बच्चों की तरह, मैं भी चाहती थी कि I should have a doll with blue eyes and golden hair, and like all the children in my class. My father gave me a black doll. एक काली गुड़िया देकर उन्होंने कहा black is beautiful too for a 7-year-old child. तो मुझे लगा ये थोड़ा सा ज़रा मेंटल है डेफिनेटली. और फिर मैंने वो छुपाई दिया, वो गुड़िया को मैंने छुपा दी. लेकिन फिर जब अब्बा फिल्मों में गाने लिखने लगे तो एक मर्तबा उनकी तस्वीर पेपर में आई. तो my friends came running and said, your father's photograph is in the papers. And I said, what do you think? He's a poet. And what was a disadvantage I made into an advantage? That was the first lesson he taught me, I think. तो ये एक चीज़ मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे कि अम्मी जान जो हैं वो है तो शौकत आज़मी के नाम से भी जानी जाती हैं, लेकिन कहीं सुना कि वो शौकत कैफ़ी लिखती थी जी, और कैफ़ी साहब तो कैफ़ी आज़मी हो ही गए जी. तो ये दोनों के नाम में कैफ़ी होने में कोई उल्फत वाली बात, कोई ऐसा कोई नहीं. असल में मम्मी तो आजमगढ़ की नहीं थी. She was from Hyderabad, from Andhra. So she said, when I'm not from Azamgarh, why should I call myself Azmi? So that's why her name, her maiden name was Shaukat Khanam, and then she became Shaukat Kefi. She didn't use the word Azmi. अच्छा. तो अब आप नाराज मत होइएगा, मैं आपको कोई उन्होंने बोला मैं नाराज होती तो भी खूबसूरत लगती हूँ, तो हो सकती हूँ मैं नाराज. इजाजत है मुझे उसकी. लेकिन हम आपको कभी ऐसा मौका नहीं आने नहीं देंगे. एक क्या है कि आपकी वालिदा ने एक शायर से शादी की और आपने भी एक शायर से निकाह की, तो ये महज इत्तेफाक था या शायरी से मोहब्बत का इजहार? देखिए, मेरी माँ ने मुझे बोला था शायर से कभी नहीं, शायर के चक्कर में कभी नहीं फंसना, वो खूबसूरत शेर लिख के तुमको फंसा देंगे, तुम ये करना नहीं है. एंड देन आई डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी टोल्ड मी, व्हिच इज फॉल इन लव विद अ पोएट. Jokes apart, poetry is something that I grew up with. I have a great respect for the spoken word. और अगर लोग मेरे सामने, if they mispronounce a word, I find it very, very painful. Especially today's language, where they've changed the spelling, they've changed the pronunciation, and now तो मतलब OK को they say only K.
भाई अगर आपको ओके बोलना तो यू राइट ओ, बट व्हाई के? I don't understand. So what's happening with language today? That's something that concerns me because I'm the spoken word is very important to me because I grew up in that. लेकिन अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें, तो मेरा तो लफ्ज़ तो सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। नहीं, मगर आपके लिए बिल्कुल जायज़ है क्योंकि आपकी ये ज़बान नहीं है और आप उसको सीखने की आपने इतनी मेहनत की है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप फिल्म एक्टर हैं, हिंदी फिल्म एक्टर हैं, तो हिंदी ज़बान आप बोल रहे हैं, तो यू बेटर से खूबसूरत, यू कांट से खूबसूरत, you better put the nukta where that nukta is supposed to be. My husband is Javed Akhtar. A lot of people call him Zaved. So they say, why do you call him Zaved? He says, poor thing, they're trying to pronounce my name correctly. So they put a nukta where that none is required. So there's a lot of confusion about how khoobsurat, khoon, khamosh, the dot has completely disappeared from the language. That I feel bad about. ये आपकी ही नहीं, हम भी जो हमारे नेपाली भाषा में या कोई नेवारी भाषा में या किसी भी मतलब लैंग्वेज में बात करते हैं, तो अभी ये थोड़ा इधर भी ऐसा ही हाल है। बहुत तकलीफ होता है मुझे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार बच्चन साहब जो हैं, बच्चन साहब बने बिग बी बुझे वाला नहीं, बच्चन साहब महान की शूटिंग में काठमांडू आए थे। तो हमारे एक एक्टर थे, विश्व बच्चन उनका नाम है, वो और हम सब जाके उनके यहाँ इंटरव्यू करने गए थे। हम लोग फिल्मी मैगजीन कर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, हुआ कुछ नहीं। तो बस से दीजिए उन्हें, वो लोग कहीं दूर कहीं जाके मतलब मंदिर में जाके वो आए हुए थे, थके हुए थे, लेकिन टाइम दे दिया उन्होंने। तो मेरे वो दोस्त विश्व बच्चन जी ने पूछा उनको लास्ट में एक क्वेश्चन, उन्होंने पूछा कि आप तो कवि के पुत्र हैं, है ना, तो कविता लिखने का शौक़ आपको चर्राया नहीं? तो बच्चन साहब ने अपनी माँ की तरफ, तेजी जी के तरफ देख के तुरंत जवाब दिया। वो बहुत हाजिर जवाबी है। मेरी माँ कहती है कि घर में एक कवि काफ़ी है। हाँ नहीं, लेकिन आपके घर में तो दो शायर हैं। तो मुझे बहुत पूछते हैं कि आपके पिताजी शायर, आपके पति शायर, आपके फादर इन लॉ शायर, तो आप शायरी करती हैं? तो मेरा जवाब होता है नहीं, मैं इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती हूँ। क्या बात है। दैट इज द बेटर थिंग टू डू। आई डोंट गेट इनटू दैट कंपटीशन। क्या बात है। और अब शायरी तो आप नहीं करती हैं, आपने बोल ही दिया। तो लेकिन एक्टिंग के अलावा आपने गाने गाए हैं। बहुत पहले आपके वो कैसेट एक आया था अंजुमन बोल के, ये चंबी से, वो खरीद के ला के, क्योंकि आपके फ़ैन तो थे ही, तो गाना भी सुनने को मतलब दिल किया तो लेके आए। बहुत पैसा महंगा था, 50 रुपीज़, और मेरे पास नहीं था, जोड़ के विद इन अ वीक, है ना। तो जाके, और उसमें क्या है कि वो शायर थे शहर यार मेरे ख्याल से। तो एक बहुत खूबसूरत गाना था जो भूपेंद्र साहब से आपने गाया था। इतने ऐसा लाइन कि मैंने अभी तक ऐसा मैं लिख नहीं पाया। अगर लिखूंगा तो उनका नकल किया, लोग ऐसे सोचेंगे, तो नहीं किया। वो लाइन क्या था कि गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, हवा ने पहले तुझे और मुझे छुआ होगा। नहीं, मगर इससे भी ज़्यादा अच्छी लाइन जो मुझे लगती है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो कहता है कि ये सोच सोच के थकती नहीं है रात मेरी, ये सोच सोच के थकती नहीं है रात मेरी, कि तुझको सोते हुए चांद देखता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या लाइन है। Just too beautiful. नहीं, too beautiful. ये बहुत ही अच्छा लाइन, बहुत ही अच्छा लाइन था सच में। अब ये क्या हुआ? यो पनि यहाँ छिर्दो रहेछ, यो पनि छिर्दो रहेछ, के हो? मेरो टेक्निकल टिमको भाइहरू सबभन्दा खतरा भनेको यस्तो गरे।
तो अब फिल्म में आते हैं। आपकी पहली फिल्म अंकुर में ही आपको नेशनल अवार्ड मिल गया। कम उम्र में ऐसे रिवॉर्ड मिलने से आपकी जहन में किस प्रकार की तब्दीली आई? आगे आपने तो आसमान को छू लिया, क्या उसकी तस्वीर आपको तभी दिखाई दी थी जब वो अवार्ड मिला? नहीं, असल में it was so surprising to get the national award for the very first film that I did that it didn't really quite register with me at that time. मगर एक बात मुझे ऐसा लगता है फिल्म को लेकर कि फिल्म बहुत कोलैबोरेटिव मीडियम है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दें if the part is not well written, if your co-actors are not telling the truth, if the editing is not correct, if the camera work is not correct, if the sound is not correct, if the lens in which you're being shot is not correct. It is dependent on so many other factors. एक्टर को सबसे ज़्यादा तारीफ इसलिए मिल जाती है कि एक्टर सामने होता है स्क्रीन का, लेकिन खुद जो एक्टर है उसके दिल में बहुत इज्जत होती है अपनी टेक्निकल टीम के लिए कि ये टेक्निकल टीम पूरी काम कर रही है कि मेरी जो कमज़ोरियां हैं उसको छुपाएं and enhance my strengths. So for me, film is a very collaborative medium, and the director is the captain of the ship. Stage, theater is the actor's medium. Because see, when I am on stage, I could have rehearsed anything. You could have given me as many instructions as a director can give. But when I'm on stage, then it's a direct connection between the audience and me. So it is what I give to that part. And also what happens is theatre mein, you keep doing the same thing over and over and over and over again. तो वो mechanical होने लगता है. फिर what you do is आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैंने बहुत अच्छी की तो आप उसको imitate करते हो. कल मैंने अच्छा किया था, कल इस पे तालियां बजी थी तो आज मैं वही करूंगी. That means you are not in the moment. You are not reacting to the truth of today. You are reacting to the memory of yesterday. क्या बात है. That is the wrongest thing for an actor to do because you have to be alive, be in the moment. And that is the greatest discipline that an actor needs. You know, when people say that we want to be actors, what is the advice you would give us? तो मैं बोलती हूँ लोगों के पास अलग-अलग आइडियाज़ हैं एक्टिंग के बारे में. वो सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन ये रोल कितना अच्छा करता है. I should do it like Amitabh Bachchan. You've already cancelled what you are capable of doing at that time because you are imitating. But acting has to come from within you. The truth has to come from within you. It has to come from a whole lot of emotional memory that you can carry with you. Or emotional, just Stanislavski, I'm a Stanislavski student. That emotional memory can only come during the rehearsal. But at the time of the performance, it's that scene. You know, you can't, if you felt that, all right, you did a scene of anger with your brother, you had a very bad fight. And just now you're having a fight with a politician, for instance. You cannot bring the anger that you felt with your brother to the scene with the politician because that's not the truth. So it requires a lot of training and a lot of understanding of what the craft of acting is. That's what I think. Thank you. अब हम 1988 में जाना चाहते हैं जब आपने जॉन स्लेसेंजर की फिल्म मैडम सुसात्स्का में काम किया था. एक फनकार को नई जगह में अनजाने लोगों के साथ काम करने में क्या क्या चीज़ से डील करना पड़ता है, मुश्किलें थी तो कैसी थी और आसानी किस बात पे हुई? अगर if you feel comfortable, then please, ma'am, we'd love to listen. You know, it was 1989, I think. So there had been very few instances of
Indian actors actually going and performing on a Western screen. I was the only Indian in that whole unit. And it was a different way because everything is so organized. Everybody has their script. Everybody knows exactly what they have to do. So that wasn't in Hindi cinema. राजेश खन्ना और मैं एक सीन का पहला पेज कर रहे होते हैं, दूसरा पेज कादर खान जो कि एक्टर भी और राइटर भी है, वो किसी और स्टूडियो में बैठ के दूसरा पेज लिख रहे हैं. तो वी आर डूइंग द फर्स्ट पेज विदाउट नोइंग व्हाट द सेकंड पेज is going to be. We are also doing 2 films a day. So you're doing 7 to 2, one film, then you're going to another studio, then you're doing 2 to 10. So the requirement of Hindi cinema was just be able to speak your lines and that's about enough. That isn't what acting is about. That happens now because they've got a complete script, because they do workshops, they're giving time, everybody knows what they had. लेकिन मैडम सुजात्स्का का मैं एक आपको बताना चाहती हूँ. I was so impressed. There was a scene between Shirley MacLaine and myself. So they took Shirley MacLaine's shots first because she had to go off to see a play. They took her close-ups first. And then it became my time कि मेरा close-up करेंगे. तो imagine Shirley MacLaine इतनी बड़ी star, वो आके मुझसे कहती है, शबाना अगर मैं अपनी wig उतार दूँ, तो will you be thrown by? मैंने कहा why? So she said no, because I look completely different if I don't have the wig. And this is, she's not in the camera. She's just giving me the cues. So I said, you know, you must be joking. हमारे पास तो एक assistant director बिल्कुल फ्लैट आवाज में इस तरह से डायलॉग बोलता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है. तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे क्यों दे रहे हो. So this discipline of the co-star and the actor and the respect for your co-star is something that I learned in Madam Suzatska. It's something that I carry in my heart. Thank you. आपको हिंदुस्तानी सिनेमा में वन ऑफ द वेरी फ्यू आइकॉनिक आर्टिस्ट के रूप में मैं लेता हूँ, जिसने उस ज़माने में जिंदगी की कुछ अनछुए पहलू, अनसोची और चुनौतियों से भरा बेमिसाल किरदार को बखूबी निभाया. मिसाल के तौर में अर्थ, मंडी पार जैसे फिल्मों के नाम लेना चाहूँगा, जिससे अपनी ज़िंदगी से दूर तक रिश्ता ना हो. वैसी किरदार में जान डालने के पीछे क्या मुश्किलें हैं, एक फनकार को किस तरह की होमवर्क करना पड़ता है? See, I think acting is a very rewarding profession because आपको मौका मिलता है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने का, उनकी दुनिया को इनहैबिट करने का. अब जब मेरी पहली फिल्म थी अंकुर, I had never been inside a village in my life. So it was the first time I went to a village. So I had to learn so many things to be able to do that. And when I played Lakshmi, Lakshmi's reality became part of Shabana Azmi's personality. So it's an addition to me that I am playing these different characters and their life becomes an experience that I feel which I wouldn't have if I was not an actor. But for that, जो ज़रूरी है कि शबाना आज़मी को अपने आप को constantly develop करना पड़ता है. तो मैं बोलती हूँ एक्टर के लिए ज़रूरी है कि आप प्ले देखें, फिल्म देखें, किताब पढ़ें, म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाएं, आर्ट देखें. सब कुछ आपके समझ में भी नहीं आएगा. But it is very important that you expose yourself because somewhere along the way you start understanding what excellence is. And when you get enriched and when you have a wider experience of life, then you can add to that character. Mm-hmm. So it's a double relationship that you have. Now, how does an actor do that? When I was doing a film called Mandi, in which I play the madam of a brothel, तो मैं 3 different brothels में गई. एक मुंबई में
एक जगह मुझे फारूक शेख लेकर गए. फारूक शेख को ब्रॉथल्स के बारे में इतना क्यों मालूम था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो मुझे लेकर गए थे वहाँ. तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ जो है ना वो फिल्म स्टार्स की तरह ड्रेस होती हैं, वैसी रेड लिपस्टिक लगाए हुए, बिल्कुल अलग. दे वर ट्राइंग टू बी अ हिंदी फिल्म स्टार. Then after that, I went in Delhi with Amrita Singh's mother, Rukhsana. She took me to GB Road. Over there, I found that they were completely different. It was completely different culture. It was the kind of culture where it was believed that young men should be taken to the Tawaif so that they learn about manners and things like that. तो एकदम पुराने स्टाइल का वो था. उसके बाद फिर हम लोग हैदराबाद में गए, श्याम बेनेगल और मैं, और एक लड़की वहाँ बैठी थी. मतलब एक मेकअप का उसका हिस्सा भी नहीं था उसके फेस पे. एक छोटी सी कद की, she was wearing a nylon sari and a white blouse and with her head down like that. And then somebody said, she'll dance for you. So I said, okay. So there's a song of mine from a film called Fakira. दिल में तुझे बिठाकर कर लूंगी बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी. To that song, she danced and it was the most vulgar interpretation of Puja Karungi that I'd ever seen in my life. And I couldn't believe कि ये लड़की जो ऐसे बैठी हुई थी वो किस तरह के gyrations कर रही थी. I said, oh my God. And then again she went and sat like that. So I asked her, I said, why do you do this? So she said, you'll come behind and see. I said, yeah. So it was like a Hindi film. She had her mother who was very ill. She had a father who was paralyzed. And she had 8 brothers and sisters. She was the sole earning member. And that's why she was doing it. So now when you are playing that character, you have to have some empathy for the character. You can't just choose that character, say that, all right, I will observe you and then do my own thing. So in that process, when I was working and when I was seeing her gestures and all that, I was also observing what her reality was. There was a film that I did called Par. So in that, the sweeper woman, मैं उसको देखती थी वो किस तरह से झाड़ू लगाती है, किस तरह से बैठती है, करती है. तो फिर हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि I was using her as a model. तो फिर उसने कहा कि आप मेरे घर चलेंगी, will you come to my house? I said, yes, of course. And I went to a house and I felt I had never seen poverty of that kind in my life, because there was this completely airless room. It had no water, it had no electricity. There were people stuffed in that room, and I felt that she was being so generous to me. और उसके circumstances कितने ख़राब थे. और फिर I felt कि अगर मैं वापस चली गई और मुझे एक नेशनल अवार्ड मिल जाए ये परफॉर्मेंस के लिए जो मिला, और फिर मैं उस जैसी लड़की की ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ नहीं करूं, तो जब हम लोग दोस्त बने थे तो मैंने उसके साथ झूठ खेला था. और इस तरह से जो स्लम्स में काम करना मैंने शुरू किया वो उस फिल्म की वजह से, और उसको मैंने बेस करके अपनी बनाया था. That's how it happened. No, please. Thank you. That's just because I'm my parents' daughter. Thank you. I think आपको सुनते ही जाए, मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन अभी जो वाक़या आपने सुनाया ये आप ही कर सकते थे. जिस किस्म के इंसान आप हैं, जिस किस्म का रूह आपका है, तो यू आर नॉट जस्ट ए स्टार, एन एक्टर. यू आर वेरी, मैंने जो पहले बोला था आपको, ब्लेस्ड एंड काइंड सोल. आई वाज ट्रू. See, for an actor, I think becoming a star
should just be a byproduct. It can't be what you are looking for. Because I tell you what happens between an actor and a star. When you're an actor, your resource base is life itself. आप रिक्शे वाले से बात करते हैं, आप जो भाजी जिससे खरीदते हैं उससे बात करते हैं, you speak to the bus driver, you are connected to life. When you become a star, you can't afford to do any of that. So then in concentric circles you get, so there is the chowkidar, then there's the security guards, then there's the makeup guy, then there's the hairdresser, then there is the manager. So before life can touch the star, 8 sets of people have to be bypassed. And the star becomes completely isolated in that world, and the connection with the world completely disappears. So you, after you work, then in the evening you meet people who say, "Wah, wah, what a star you are." Your connection with life starts getting completely gone. And that cannot be good for any artist. Because for an artist, whether you are a poet or you are an actor or you're a painter, you have to be connected to life. आपकी पूरी inspiration आपको जिंदगी से मिलनी चाहिए. So the danger of becoming just a star and not going back to what it means to be an actor can be very, very fatal for all artists, not just for actors, I think. That's very important. Thank you. Thank you. मजाले अच्छा, जोर से ताली बजा सकते हैं? त्यो Thank you. साँच्चीकै उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू मन पर्यो भनेदेखि त्यसले दिल छोयो भने जोडले ताली बजाउँदाखेरि के पनि जाँदैन. तो एक चीज़ है, मतलब कई लोग हैं जो मनोरंजन के लिए फिल्म देखना पसंद करते हैं. Like they don't want to see Par, they don't want to see Earth, they don't want to watch कागज के फूल by the legendary गुरुदत्त साहब. तो लेकिन जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं वो लोग अपने दिमाग को सजा देते हैं. ये कहना मेरा नहीं है, ये अभिनेता मोहन आगाशे ने कहीं बताया. एक इरफान बोल के दोस्त थे हमारे दिल्ली में, उन्होंने अपने किसी उसमें उसको लिखा था, तो मैंने बहुत साल पहले उसको पढ़ा था उसको. तो आपको क्या लगता है? I have no problems with that because it's perfectly fine. अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि कला मनोरंजन का एक जरिया है और वो सिर्फ मनोरंजन करना चाहते हैं, वो मीनिंगफुल कला नहीं करना चाहते, I have no problem. मगर फिर रीडिफाइन एंटरटेनमेंट. मनोरंजन का मतलब इतना वल्गर, इतना क्रास, इतना टेस्टलेस होने की क्या ज़रूरत है? मनोरंजन can also be very nice. So we must redefine मनोरंजन. But I cannot say that what I think cinema should be, everybody should say that, then I'll become a dictator. People, the audience should have a choice. Like an audience, the reader decides, I want to read Shakespeare, or I want to read a racy novel, or I want to look at comics. It's the reader who's deciding. So we must give the audience choice, and then the audience selects what it wants. But if you want people to appreciate good cinema, to appreciate good theatre, तो स्कूल में आपको ये करना होगा. ये नहीं हो सकता है कि आप जो है कुछ इस बच्चे को अच्छे सिनेमा के बारे में बताएं ही नहीं और फिर at the age of 20 you expect him to become a very discerning student who only likes. So if we understand in our educational curriculum how important art is for the overall development of a person and give it the same kind of weightage that we give studies and we give sports, that's what we need to do as a society and as a government, I think. ये मैं हमारे यूनिवर्सिटी पास आउट अनूप बराल के साथ बार बार यही बात कहता हूँ कि पोइट्री एप्रिसिएशन, पेंटिंग एप्रिसिएशन एंड थिएटर एप्रिसिएशन, फिल्म एप्रिसिएशन का कोई चीज़ जो है वो स्कूल से ही लोगों को
सिखाना चाहिए, Sure. ताकि वो जाके डिसाइड करेंगे कि क्या मनोरंजन है ना, और कौन सी फिल्म गुड है, कौन सी बैड है। तो थिएटर आम लोगों के लिए क्या मायना रखता है आपकी आज की तारीख में? कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एलिट लोगों के लिए लग्जरी और एंटरटेनमेंट है। Different kinds of theatre, na? Different kinds of theatre. Whether because my father, when he was the head of IPTA, he said, "Why must people always come to a proscenium theatre to watch plays? Why can't we go to the community, and why can't we do it there?" So that kind of street theatre, etc., is a completely different thing. But I think the challenge for theatre is cinema. क्योंकि डायरेक्टली ऑडियंस ये सोचती है कि अरे ये मैं थिएटर में 5 लोगों के साथ जाऊंगा तो मेरी फैमिली का बहुत नुकसान हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं OTT पे फिल्म देख लूँ। तो व्हाट डज थिएटर नीड टू डू? थिएटर नीड्स टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम सिनेमा, बिकॉज एज a medium, theatre has the possibility that I just stand like this and the audience can get convinced that I'm a tree. You can't do that in a film, but you can do that in theatre because it's a willing suspension of disbelief. We need to go back to that. Instead of just competing on realism, we need to go back to the medium of theatre. So the person who's watching film gets to watch something different and then starts coming to theatre for that. So I think those elements we need to develop much more. That's what I think. थैंक यू। ये एक थिएटर आर्टिस्ट को मतलब कैसा शौक रखना चाहिए, मुझे ज़रा इसकी क्यूरियोसिटी हुई है। जैसे कि लिटरेचर, म्यूज़िक, पेंटिंग से उनका कितना करीबी रिश्ता होना चाहिए, और एक आर्टिस्ट को अपने हुनर में गाढ़ापन लाने में किस प्रकार की प्रैक्टिस करना चाहिए। शायद मेरे साथी कलाकार इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बिना उनकी इजाज़त पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं एक प्ले करती हूँ, ब्रोकन इमेजेस। It's a one-woman play. It's a conversation between a fixed television screen. So there are two sisters talking to each other. So one is a real person and the other is a previously recorded image. Okay. But the previously recorded image is also moving and looking. So the timing has to be perfect. Because if I'm looking here and the live person is talking to me, it can go completely wrong, right? So technically it has to be perfect. Every single time before I do a show, I do the entire rehearsal. That means when I give one performance, I give 2 performances. Because for me, to manj jana jisko kehte hain na, to be perfectly, because I don't do it every single day, na? When it comes back, then I need to get back into the rhythm of it. And very strange things happen. Once, I was doing this play, Broken Images, और वो जो programmer है वो मेरे पास आके कहता, and it was an 1800 audience का seating capacity. He says, "Madam, सिर्फ 20% लोग अंग्रेजी जानते हैं, the play is in English." तो मैंने कहा, "Isn't it a bit late in the day to tell me that?" तो मुझे वो कहता है, "आप कुछ आप हिंदी में कर दो ना." मेरा जी के एक थप्पड़ मारूं उसको कि उसको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है। Brother, you won't believe I went and did the entire play in Hindi, translating on my feet. So this woman was talking in English and I was talking in Hindi to her. Now that happens in the spur of the moment, and because you're ready, you can do that. Today, if you tell me do it, I won't be able to do it. But when you are in the moment, to be in the moment for something, when you're doing it over and over and over again, needs riyaz. It needs riyaz. You can never afford to get mechanical. You can never believe
I know it. I know the audience is going to laugh over here. I know the audience is going to do this, that. You can never afford to do that because you will be proved wrong. And a thing that my mother told me, which I really would like to tell all of you is, kabhi-kabhi actor ko stage pe pata chal jata hai, you've lost the audience. Okay, the audience is not with you. So what the actor does is becomes desperate to try and get the audience's attention. So we'll do something extra. My mother said, never do that. Go back to the truth. Go back to the truth and concentrate completely on the truth, and the audience will come back. If you make a desperate attempt to get the audience, you lose it. So that's being in the moment, I think, is very, very important. तो जोरली बजाए के जानता है फकीरा में शशि कपूर के साथ शशि कपूर साहब के साथ हूँ या स्पर्श में नसीर साहब के साथ आप लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, ये मैं कहता हूँ और दुनिया कहती है। लेकिन आपने गुफ्तगू में जिक्र किया था कि आप अपने फिल्म देखते वक्त अपनी खामियों को ढूंढती हैं जो औरों को नज़र नहीं आता। उसका कोई राज है जो हमारे साथी कलाकार को काम आए? एक आर्टिस्ट को कितना ज़रूरी है कि अपने काम को लेकर ऑब्जर्वर या क्रिटिकल होना? बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी, बिकॉज एक्चुअली यू शुड बी एबल टू नो better than anybody else. अगर आपकी बहुत तारीफ हो रही है and people say fantastic, but in your heart you know that you weren't honest, then you should know that fact. Because you have to be critical. You have to be critical and you have to be humble. That's very important. You know, you cannot say that I'm the master, I know everything. You'll fall flat on your face. So a certain humility is very important. मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ आप बोलते रहें और मैं बस सुनता रहूं। अच्छा, एक बार राजकुमार साहब ने, मैं ट्विटर में देखा इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू में कहा कि जानी टोटल रोल शायद किसी भी अदाकार को अभी तक नहीं मिला जिसे टोटल रोल कहते हैं। द टोटल प्ले ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो उस हिसाब से तो यही कहेंगे कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए और शायद हमारे रास्ते में आएगा भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। आपको कैसा लगा? मतलब No, but the fact is that it can't come in only one role, no? Exactly. It will come, these emotions which you want to experience, they will come through different roles. If you are in search of that one role that will give you the chance to display every single skill of yours, it's not going to happen. You have to snatch moments and you have to learn from those moments. I find it very easy to work with somebody like Nasiruddin Shah, because when I'm acting with him, his eyes are telling the truth. तो जब वो सच बोल रहा है तो मेरे लिए सच बोलना ज़्यादा आसान हो जाता है. क्या बात? तो your co-actor is a very, very important part. Very, very important. अब हम थोड़े मतलब इसको अंजाम देते हैं. एक दो सवाल मतलब क्यूरियोसिटी है अभी, और मेरा एक अभी बताएंगे बाद में. आपने प्रूव कर दिया है कि स्काई इज़ नॉट अ लिमिट. ये तकदीर है, मेहनत है, या क्या है? No, I think my career has really been about being lucky for being at the right place at the right time. Really, I have been very lucky. But society keeps changing. And it is a very interesting point now that roles are becoming available for older people and older women. Because normally in Hindi cinema, by 35 you were already too late. Then you were just given a side role. But today, I'm getting some of my best parts, and that's,
I'm very fortunate to be able to do that. So I think it's a mix of many things, and because I'm not a bad actress. Hey, you're superb. You're superb. More than superb. मैले तपाईँहरूलाई पनि एउटा केही कुराकानी गर्ने मौका दिनुपर्छ, हामीले त्यही प्रकारले आयोजना गरेको थियो यो कार्यक्रम। तर त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो दुईटा इन्सिडेन्ट चाहिँ छ कि जुन चाहिँ यहाँहरूलाई पनि सेयर, यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन। ये अभी जो हम सुनाने जा रहे हैं यहाँ के किसी को भी मालूम नहीं, ये टीम के जो मेंबर ऑर्गेनाइजर जो भी है किसी को भी मालूम नहीं, कभी बताए नहीं किसी को। इतनी प्यार से रखा उस चीज़ को, सच में। लेकिन उससे पहले हम एक आपको सुनाना चाहते हैं। आप शायद कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में नेपाल में कभी पहले आई थी शायद, तो वहाँ पे हमारे एक बहुत जाने माने बहुत ही प्यारे म्यूजिक कंपोजर गोपाल योंजन, वहाँ पे ही वॉज अवार्डेड बाय नेशनल अवार्ड। सो कोई एकदम वो पूरा नेशनल ड्रेस पहन के कोई वो सरकारी ऑफिसर जो आके उनको उनका अवार्ड दे दिया। तो घर जाके वो उनकी बीबी अभी भी हैं रेंचिन योंजन, तो उनके साथ बहुत नाराज़ हो गए वो। तो क्यों, क्या वो नेशनल अवार्ड मिला है तुमको नाराज़ क्यों हो? नहीं, वहाँ पे शबाना आज़मी जी बैठी हुई थी, तो उनके हाथों से वो अवार्ड मुझे देने में उन लोगों को क्या तकलीफ थी कि अवसर क्यों आया मेरे पास। ये उन्होंने सुनाया था मुझे। सुनेको थियो कहिले? अब मेरो पर्सनल एउटा सुनाउँछु म। हम वो राजकुमार साहब की आदत लग गई है लेकिन मुझे अच्छा लगता है हम बोलने में। तो लेकिन कपिल शर्मा जी को अच्छा नहीं लगता है। हम बोलेंगे तो कितने सारे लोग हैं, मैं बोलो यार, है ना। तो के म हँसाउँदैछु क्या? ओके, लेट मी कम टू दैट पॉइंट। मैं 16 साल का था, तब से मैं अकेला रहा इस शहर में, है ना। तो कोई नहीं था, तो मुझे ये लगता था कोई सपना की मतलब सपनों की कोई राजकुमारी जो है वही मेरी उद्धार मतलब रेस्क्यू कर सकती है। सच में कह रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग ही ऐसा था कि अब वो आके मुझे रेस्क्यू करेगी और मुझे खाना पीना ये जो इधर उधर जो भी है, मुझे कुछ खुद को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ख्याल कहाँ से आया मुझे पता नहीं। तो उस हिसाब से एक वो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। तो आपकी जितने भी फिल्में देखें तो उसमें योर कैरेक्टर वाज सो स्ट्रॉन्ग, तो मुझे उसमें राजकुमारी दिखाई दी। तो मतलब अब मैं इनकी देखभाल करूं? नहीं 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 नहीं, ये तब की बात थी। ये आई एम ऑल्सो जोकिंग। ये लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर तक बुझ रहा है क्यों। और उसके बाद में क्या हुआ कि तो इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जो है इसकी रूह पाक है ना। और इस लड़की का जो है मतलब ये इससे कोई गॉडेस कोई नहीं हो सकती है, ऐसा मेरे जहन में आया व्हेन आई वाज इन दैट एज। तो क्या हुआ कि मैंने, अब पैसा था नहीं, कहीं कहीं से कुछ कमाई होती है क्या होती है, मतलब वो क्या कमाई था, कभी कभी फाके कर लेने पड़ते थे। तो कहीं से जाके ये ऐसे ही पेज में 4 पेजेस लेके आया और एक पेन लेके 4 पेज तक मैंने पता नहीं क्या लिखा। अब पूरे एक फ़ैन है लेकिन कोई वो भी कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट भी कर रहा है ना, कि ये है, पता नहीं क्या लिखा होगा मैंने। और मैंने सोचा वो खत आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा होगा, मतलब 4 पेजेस, फोटोकॉपी नहीं था। अगर था भी तो मैं कैसे उसको फोटोकॉपी करता, पैसे नहीं थे ना, है ना। तो जाके बाद में वो जावेद साहब के साथ आपकी शादी हो गई, है ना। तो मैं असल में मैं उस टाइप का आशिक नहीं था, ऑनेस्ट आशिक था। तो उससे क्या, उस वक्त मुझे क्या पता चल चुका था
कि वो जो मैंने ख्याली पुलाव जो बनाए थे, है ना, वो कोई काम की चीज़ नहीं थी, लेकिन उस चीज़ को आज के तारीख में आपके सामने जो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए क्या है कि आई एम एन एथियस्ट, लेकिन आज मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही। और आपसे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आपने क्या है कि आप गुस्सा नहीं किया आपने, क्योंकि आपको पता है कि आप गुस्से में भी खूबसूरत दिखती हैं। तो मैं मेरे ख्याल से बिफोर आई गो टू द फ्लोर, मुझे कैफी साहब की एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ज़रूर। और ये मुझे मेरी दिली ख्वाहिश है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन। तालियां हो जाए। अगर पानी चाहिए तो क्या है कि अगर आपकी इतनी जोर से ताली मिलती तो मैं पूरा ही मैं उनकी पूरी ये लेके आता, लेकिन मैंने लास्ट की पंक्तियां कुछ लेके आया हूँ। तू फलातून और अरस्तु है, तू फलातून और अरस्तु है, तू जहरा परवी, तेरे कब्जे में है गर्दूं, तेरी ठोकर में है जमी। गर्दूं बने का आकाश, तेरे कब्जे में है गर्दूं, तेरी ठोकर में है जमी। हाँ उठा जल्द उठा, पाए मुकद्दर से जबी। लड़ खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब फ्लोर ओपन छ, तपाईहरुको प्रश्नहरु। If I understand your question, you are saying that at the moment the Hindi film industry is floundering and there is a film from the south like Kantara which is becoming a very big hit. So are the Hindi cinema people thinking about what is it that they want to give? Is that what you're saying? Okay, so now ये ज़रूर हुआ है कि pandemic में people's habits, movie-going habits have changed completely. Because the only form of entertainment that they had was the OTT platform. Theatre was closed, cinema was closed, poetry was closed, nothing was happening. So they had started watching films on OTT all over the world, more so in India. And now after that, what has happened is people are rejecting a lot of the movies. And so the filmmakers are feeling that maybe we need to make the big spectacle. People should only go for the big spectacle. But I don't think that's true, because I believe that अगर कोई कहानी है जो आपके दिल को छूती है, तो वो लोग देखेंगे. So there is definitely a lot of ideating going on of what we need to do in films. But I really think that the world is moving towards gender empowerment. And if we can start making films with women as the central characters, that's something that the audience is willing to watch. I think we should start thinking about that and making more films that are women-oriented. That's what I feel. Yeah. Yes, please, there. Thank you. सपनों को बिछड़ते देखा है, दोस्त को छूटते देखा है, मोहब्बत को गैरों की बाहों में लिपटते देखा है, शराब को सहारा बनते देखा है, सिगरेट को जिस्म से खिलवाड़ करते सहा है। हमने जिंदगी को बहुत करीब से
राख होते देखा है। दुखी आत्मा है हम। हाँ ठीक है, ऐसा है, मगर थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचिए ना। Yes. It's not a question. It's just, I feel so emotional tonight just having you in front of me. You've always been an inspiration for a lot of the actors around the globe, I guess. And my heart is actually racing right now. I'm really nervous. I just want to take your blessing. And trust me, I've never been on theater. It's been 15 years of movie journey for me. Never been on theater. I just want to share the stage with you and just take your blessing. And a small something for you from my side. It's Nepali. It's Swadeshi, made in Nepal. Thank you for this opportunity. अनि मलाई चाहिँ केही छैन। Hi, ma'am. Namaste. I'm Suraksha, and I have been doing the movies for like 8 years now. I'm an actor. I have a question. Since you are an actor and activist as well, I'm in a point of my life where I think acting is about believing somebody else's reality completely, and activism is, I think, about having your strong reality. I mean, something you believe in. So these two are contrasting with each other. So how do you think an actor carry an acting and activism at the same time in the right way? You know, that's an excellent question. Did everybody hear that question? Everybody heard it, yeah? It's a very, very good question, because the question basically says that when you're acting, you're taking on somebody else's life. But when you're an activist, you are taking your own beliefs very strongly. So that seems to be like a conflicting situation. The fact is that can be true and cannot be true. Because for me, as an actor slash activist slash parliamentarian, all the mediums that I have used are for the same concerns. I have the same worldviews. So I feel very strongly about equality of women. I feel very strongly against religious fundamentalism. I feel very strongly about the oppression that the less privileged people feel for. And I have used that, whether through film, whether through my activism, or whether representing India in the United Nations. The concerns are the same. So for me, it is seamless. It need not be. It can be different. But see, the skill of an actor is I should be able to put the words, if I were. If I were a streetwalker, if I were a queen, if I were a slum dweller, if I was a noble person, I should be able to do any of the things. That's your discipline. And that is extremely important for you to do. So you have to learn to inhabit both worlds. Your world of activism be totally true to what it is that you believe. And don't look at it as a contrasting thing. Look at it as something that will enhance your life. Because when you're playing a character that you would not meet in real life, then imagine how much experience you're gaining because of that. And some lesson from that you can learn. So don't see it as a contrast. Thank you. Thank you. अब हामीसँग समयको एकदमै पाबन्दी भएको भएर अभिषेक ल सम्पदा अभिषेक पहिला सम्पदाले केही भन त्यसपछि अभिषेक I'm very happy to see a lot of girls are raising their hands. That's very good. Well, I don't know how talented you are and whether you will be able to do it, but you're absolutely right that anything to do with myth and what you do as a ritual is also obviously a point of theatre, because you want to evoke a certain response from
the audience. So your question is right. Whether you have the capability of doing it, I don't know. Last. In film, the question she says is that when you're doing a film, how much contribution do you think a director makes? For me, if I have ever given a performance that has been liked, 75% of that, 50% of that would be taken by the writing itself, 25% would be the director, maybe 30% would be the director, and 20% would be with me. And I'm saying it without any false modesty. You see, with Shyam Benegal, I've done a lot of films with Shyam Benegal. I started with my first film. And what I find very, very attractive about Shyam Benegal is he doesn't tell me what to do. Okay? He leaves me to interpret it my way. But I know that he will stop me if I'm making a mistake. He will not allow me to make a fool of myself. So that gives me the confidence to pull myself out of my comfort zone and try to do something which maybe would go wrong. Sometimes you're so shy that it can fall completely flat. Let me not do it. I know that this is what I should do. That, I think, for a director is very good. You know, that you should be able to inspire the actor. You should never show the actor how to do it. Never. That's not the director's job at all. The director has to inspire within the actor the abilities to stretch herself. And if she's going wrong, then curtail that. That's the best relationship that I have with Shyam Benegal. I'll tell you a very nice, sweet incident. When I first did अंकुर, तो मैंने बताया था ना कि मैं सीधा सिटी से पहली बार गांव में गई और गांव में मैं जो ना आई कुडंट सिट ऑन माय हॉन्चेस, ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी. तो शाम ने मुझे बोला कि बट अ लॉट ऑफ इट इज सिटिंग ऑन योर हॉन्चेस, सो यू बेटर प्रैक्टिस फॉर दैट because otherwise it'll look very odd. So then he said, all right, you sit on the ground and eat your food. We'll all be sitting on the dining table. You sit and eat there. So about 4 or 5 days I sat with great difficulty with some stool, etc., etc. Then finally I got used to sitting on my haunches. So in about the 6th day, some boys from a college had come to the set. And they looked at me sitting over there and eating. And they said, where is the heroine of the film? So I said, she hasn't come today. Chutti hai. So, what are you doing? I said, I'm the Aya. Ah, theek hai, they said, and they went away. Then Shyam was looking at me and he said, you've managed to convince those people that that is the person you are, so now you can come and sit and eat with us at the dining table. That was wonderful. क्या बात है. Wonderful. क्या बात है. तो thank you. Yeah. You've already asked a question. We can only ask people. Yes, go ahead. Ask a question, okay? So as a woman, every time I find this struggle of articulating things in a professional space, and I find you very fine at doing that. So how do you consciously practice, like making sure that you put in the table what you really want to tell? You know, I grew up in a particular family where I was advised that I should be able to tell what my heart says. But it doesn't mean that just because you've got the space to say you should become an iconoclast and you should just break every single image that there is. You also, as you grow older, when you're young and you have greater fire, you want to be stronger. And then you realize after a while that, you know, you need to pick your battles. You can't make the whole world an enemy. Because when you are trying to break certain barriers, it is very important that you develop solidarity with people who think similarly with you. And I think today the space for a woman to come out and actually say what she says is a lot better. क्योंकि उससे पहले बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने वो रास्ता इस रास्ते पे चले हैं और आपके लिए मशालें लेकर
जाएं, तो आप जो है सिर्फ कॉन्ट्ररी होने के लिए हर बात को कंट्रोवर्शियल बोलने के लिए मत करिए. तो बट पिक योर बैटल्स. जो आपके लिए नॉन निगोशिएबल है उसको नॉन निगोशिएबल रखना पड़ेगा. मुझे तो फिल्मों में बहुत सारे रोल्स को मना करना पड़ा. बहुत सारे रोल्स जिसमें ऐसा लगता था कि द वुमन इज प्लेइंग, द फिल्म इज इंडोर्सिंग दैट द वुमन इज सेकेंडरी टू द मैन. I refused a lot of money. I refused to do those films. You have the courage to say no. That's what you need to develop. The courage to say no. थ्याङ्क यू शबानाजी. म दयालु मान्छे हो, तर के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रब्लम के छ भने हामी उहाँलाई डिनरमा लिएर जाँदै त्यो दोकान बन्द गर्ने भयो कि, त्यस कारण सरी प्लिज. Yeah, go ahead. Blue cap. So my question is, you told initially आपने बोला कि you've inspired poets in your life rather than being a poet yourself. So as a muse or as an inspiration to those poets in your life, have you ever felt, maybe the wrong word, have you ever felt unjustified as a muse or as an inspiration? I've not been a muse. It was only a joke. Oh, it's my life's ambition that's how they should think of me. I'm no muse views. कुछ नहीं है. That's मेरे दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. तो लिएर आऊ त त्यो सामान लिएर आऊ त. होइन, त्यहाँ उहाँलाई खाना नै रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न लाग्यो के. कसरी थर्काउने यार, मैले म आफैलाई थर्काउन नसक्ने मान्छे. Thank you so much for such a fun, informative session. अब चाहिँ ढिला नगरी एकदम ढिलो भइसकेको छ, त्यही भएर ये ख़त्म करने के लिए तो मुझे अपने बाप का एक शेर ही सुनाना चाहिए ना. उन्होंने बहुत सारी शायरी की है, उन्होंने औरतों के लिए कहा है, मकान के लिए कहा है, बट आई कीप इट सिंपल. एंड आई थिंक कि अगर हम सब लोग आज के दौर में अगर उस बात को अपने दिल की बात रख लें. 2 शेर सुनाऊंगी. प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा. प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा. गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा. So that's a nice thing. And then another one which might be a little more difficult to understand is कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले. कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है. As theatre people, that's what we need to do. अभी एक और चीज़ बाँकी है. एउटा एकदम छोटो तर स्पेसल अनाउन्समेन्ट कार्यक्रम छ. के भन्दा हाम्रो थिएटर फेस्टिभलको चाहिँ कल्चरै जस्तो छ. एभ्री फेस्टिभलमा युथहरूबाट आउने निवेदन दिएका युथहरूमध्ये सबैभन्दा इनोभेटिभ, ट्रान्सफर्मेटिभ जुन आइडिया लाग्छ फर प्ले प्रोडक्सन, त्यो आइडियालाई चाहिँ अवार्ड गर्ने. अनि अवार्डको राशि रहेको छ 1 लाख. त्यसले फर्दर प्ले प्रोडक्सन गर्नको लागि दिएको बजेट हो त्यो. त्यसको लागि चाहिँ ओके, त्यो सहित अरू कुराको लागि त्यो अवार्डमा सबै युज गर्नु परेन, त्यसो होस् भनेर, सजिलो होस् भनेर. अनि मलाई जुरीबाट आएको खबरअनुसार यसमा विनर 1 जना मात्र हुनुहुन्छ, तर सर्ट लिस्टेड क्यान्डिडेटहरू जो हुनुहुन्छ, निवेदन दिएका अरूहरू पनि सबैको काम एकदमै सराहनीय थियो. र थिएटरबाट पछि उहाँहरूले गर्ने काममा थिएटरबाट साथ समर्थन रहने नै छ. अब धेरै ढिला नगरौँ. भेरी लकी सी इज that Shabana ma'am will provide her the award. Winner is my personal favorite, Sarita Shah. कङ्ग्रेचुलेसन सरिताजी. यससँगै अब चाहिँ हुन त हामीले जति नै भने पनि अहिले हाम्रो सबैको माया पनि अल आवर लभ इज टोकन अफ लभ.
तर ठ्याक्कै टक्क नफ्लप दिनको लागि चाहिँ फेस्टिभलको तर्फबाट म आदरणीय रेस्पेक्टेड एक्टर भेरी बिलभेड एक्टर दयाङ राई प्लिज आई लाइक टु वेलकम अनि हाम्रो फेस्टिभल डिरेक्टर सृजना सुब्बा म्याम टोकन अफ स्पोन्सर भन होस्टलाई पनि मलाई के ए ओके अनि हाम्रो सेसनको होस्ट विप्लव प्रतीक दाइलाई पनि म्यामले यो सँगै हाम्रो निट फेस्ट अब अरू हुने पनि बाँकी छ सबैलाई सक्सेसफुल बनाउन हेल्प गर्ने स्पोन्सरहरूको पनि नाम लिन चाहेँ मैले काठमाडौँ महानगरपालिका बुढानीलकण्ठ नगरपालिका नेपाल टुरिज्म बोर्ड जिजेडएफटी ब्रिटिस काउन्सिल वर्ल्ड ब्याङ्क अनि हाम्रो स्ट्राटेजिक पार्टनर्सहरू गो विन प्रोडक्सन इन्कोर मिडिया एन्ड डाइभर्स प्याटर्न्स हस्पिटालिटी पार्टनर होटलले हिमालय भिडियो पार्टनर फोटो क्रिस्टल हाइड्रेसन पार्टनर जल्पा फ्रेस वाटर अनि स्पेशल थ्याङ्क्स टु कुमुदिनी गुरुङ म्याम फर प्रोभाइडिङ हस्पिटालिटी सर्भिस टु शबाना म्याम थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू म्याम हजुर अब चाहिँ सकिएको छ थ्याङ्क यू फर बिङ हियर